Aiming to strengthen bilateral cooperation in tourism and allied sectors, the Consulate General of India and the States Division MEA India, in collaboration with the PHDCCI India-Nepal Centre, organized the India-Nepal Tourism Summit 2025 in Janakpur on Tuesday. The summit focused on developing new roadmaps to enhance collaboration and implementing measures to improve government-industry interaction for the growth of the tourism sector in both countries. A panel of experts deliberated on expanding cross-border tourism integration with a particular emphasis on neighboring Indian states such as Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Uttarakhand. Discussions highlighted strategies to facilitate travel and improve connectivity between India and Nepal, thereby fostering economic and cultural benefits for both nations. जहिया से हम सीएम बनली हन ओई दिना से चाहे वो काठमांडू है चाहे हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपन बात राखल जा रहा छे तो हम देख रहा छे मधेश के मात्रे विकास नहीं भ रहा छे मधेश के मात्रे वैसे आर्थिक रूप से सबल नहीं भ रहा छे होल नेपाल के जीडीपी में ओकर सहयोग आबि रहल छे ओकरा हम अहाँ केना यूटिलाइजेशन करल जा सके छे ओई के लागि हम सब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी लगायत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम सब बात राखने छी. Chief Minister Satish Kumar Singh reaffirmed his government's commitment to transforming Janakpur into a major spiritual and cultural tourism destination. He highlighted ongoing efforts to develop historic sites such as Dhanush Dham, ensuring that visitors can fully experience Nepal's rich cultural heritage. संस्कृति और धर्म हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू हैं और दोनों देशों के नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए एक दूसरे के देशों में जाते हैं और जाते रहेंगे और जाते रहे थे. वर्तमान में चल रहे प्रयागराज महाकुंभ मेले में भी काफ़ी बड़ी तादाद में नेपाल से श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अभी भी लगातार पहुंचना जारी है. Consul General Meena highlighted the resurgence of India-Nepal tourism as both economies rebound from the effects of the COVID-19 pandemic. He noted that business conditions have improved with positive developments in infrastructure and value-added services, making tourism a more attractive and viable economic sector. Several other notable speakers addressed the summit, including Ashok Temani, President of FNCCI, Hari Prasad Gautam, Senior Vice President of the Birganj Chamber of Commerce and Industries, Baleswar Mandal, Mayor of Dhanush Dham, and Sheetal Shah, Chairman of the Greater Janakpur Area Development Council.